Hi student, welcome to online classes for class 12th MP board student. In the previous video, I have described the lesson Wonderful World in Hindi and I think all of you understand them. And now we are going to solve our exercise related to poem The Wonderful World. Let's begin our topic. We have to increase our word power. You know, WH at the beginning of a word often suggested the movement of air, such that whistle, a high pitched noise by forcing air. Can you match what the other WH word means? Here in the column A, WH words are given and B have their meanings. So the first word is whisper. And the meaning is to say something very quietly using your breath. Whir. Sound like a bird wings moving rapidly. Whiz. Make the sound of something rushing through air. Wheeze. Breathe noisily, especially with a whistling sound in the chest. Whip. Hitting with a long thin piece of leather which makes a sound when moves through air. Whirl. To move around very quickly. I think you have to take a screenshot and do it in your fair notebook. Come into the next. Here are some abstract noun: beauty, wonder, hope, faith, and you have to choose its form of adjective, verb and adverb. Now start with beauty. Adjective is beautiful. What will be the verb of this? Beauty. Adverb, beautifully. The second word is wonder. Adjective form is wonderful. Verb, wonder. Adverb, wonderfully. Hope. Adjective form hopeful. Verb, hope, आशा करना. Adverb, hopefully. Faith, faithful. Its verb form is not here because it is adjective. Adverb, faithfully. I think you have to take a screenshot and do it in your fair notebook. Now next, the exercise is question and answer. Question number 1. What is the attire of the earth? पृथ्वी के वस्त्र क्या हैं? In the poem, I have teach you the ocean and greenery are the attire of the earth. Greenery and ocean are the attire of the earth. Next question is, which action of the wind are described in this poem? हवा के कौन कौन से कार्य इस कविता में आपको बताए गए हैं? आंसर इज, the wind shake the tree, it walks on the water, it flow on the hilltop. These are the action of the wind described in the poem. हवा पेड़ों को हिला सकती है, पानी के ऊपर बह सकती है, पहाड़ों के ऊपर भी चल सकती है. ये सभी एक्शन इस पोएम में आपको बताए गए हैं. The next question is, why does the poet regard earth a friend? कवि ने पृथ्वी को मित्रवत क्यों बताया है? The answer is, the poet regard earth a friend because it always with us in wheat field, river, city, garden, cliffs and isles. जैसे कि कोई मित्र हमेशा हमारे साथ चलता है, वैसे ही पृथ्वी भी, चाहे हम खेतों में जाएं, नदी के पास चलें, सिटी में जाएं, गार्डन में जाएं, क्लिफ्स में जाएं और कहीं पर भी जाएं, ये हमारे साथ चलती है. Here the spelling of cliffs are wrong. You have to correct it. That is CLIFF. Okay, I think you will correct it. The next question, what makes the poet tremble? किस चीज को सोचकर कवि डर गया है?
द पोएट ट्रेम्बल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ अर्थ, ही थॉट दैट हाउ ग्रेट इज अर्थ एंड ही इज टू स्मॉल। पृथ्वी के कार्यों को देख करके कवि थोड़ा डर जाता है और वो सोचता है कि पृथ्वी इतनी विशाल है और पृथ्वी के सामने वो बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड ग्रेट क्रिएशन? किस बात के कारण कवि ये सोचता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण रचना है? मैन कैन लव एंड मैन कैन थिंक्स। मनुष्य यहाँ पर प्रेम कर सकता है और मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है। द अर्थ कैन नॉट डू दिस, परंतु पृथ्वी ये नहीं कर सकती। दिस मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज द गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। और यही सोच है के कारण कवि सोचता है कि वह भगवान की सबसे अनुपम रचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am your teacher शिव कुमार झारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बगराजी, ब्लॉक कुंडम, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। Thank you for watching this.